Namaste. I welcome you all in our today's practice session by way of question and answers on our units 21 to 24 of subject retail banking and wealth management. आज के लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ चैट बॉक्स सो दैट वी कैन रिप्लाई इट इमीडिएटली। सो जैसे आपका अवगत है, हम जेआईबी और सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए एंड यही मैसेज आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स का यूज़ कीजिए एंड साथ साथ अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो तभी भी आप चैट बॉक्स के थ्रू आपका आंसर दे दीजिए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। What is the primary purpose of BCSBI कोड? BCSBI कोड हमने डिटेल में स्टडी किए हुए हैं। सो प्राइमरी पर्पज ऑफ BCSBI कोड इज इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, सेटिंग minimum standards of banking practice, enforcing regulatory instructions and dissolving of BCSBI। तो BCSBI का बेसिक पर्पज यही है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि एटलीस्ट कस्टमर्स के लिए उतना मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस तो कस्टमर को मिलना ही चाहिए एंड एवरी बैंक जब वो अपनी कस्टमर पॉलिसी डिसाइड करेंगी तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ध्यान में रख के आगे उसमें एक्शन ले लेगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। What is the primary purpose of marketing information system? MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है? Executing the marketing functions, managing the customer relationship, analyzing the marketplace information and supporting decision support system। जो MKIS की वजह से जिनको डिसीजन लेना है उनके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट डाटा जो एनालाइज रहता है वो रियल टाइम बेसिस पे या लेटेस्ट डाटा उनके पास अवेलेबल हो जाता है जो उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What are the three main functions? What are the three main functions of the marketing functions? मार्केटिंग फंक्शन के तीन मेन फंक्शन कौन से हैं? प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड प्लानिंग, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड प्रोसेसिंग, एनालिसिस, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन। सो करेक्ट आंसर इज जब आपको कोई मार्केटिंग फंक्शन करना है उसके लिए सबसे हमें पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, देन उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा and once our plan is executed we have to manage to find out whether we are moving in a right direction or not। So A is the correct answer for our question। What is the primary function of collecting and assembling data in MKIS? जो MKIS में डाटा मार्केटिंग फंक्शन वाले डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एक जगह असेंबल करके रखते हैं। वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेदर इट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, वेदर इट इज़ एनालिसिस, प्लानिंग मार्केटिंग एक्शंस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? कि जब प्राइमरी कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग डाटा इज MKIS, व्हाट इज इसका मेन पर्पस क्या है? कि जब भी डाटा किसी को भी ज़रूरत पड़े वो इमीडिएटली डिसीजन मेकर्स को अवेलेबल हम कर सके। दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ए इज ओके, आई एम रॉन्ग हियर। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको असेंबल करते हैं, द प्रोसेस दैट फंक्शन इज नोट एज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। एंड next is once that data is processed it will be stored and this will be made available to those authorities who wants to take the decision
सो दैट उनके लिए रेडीमेड डाटा अवेलेबल हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू टेक द करेक्ट डिसीजन. What is the role of MKIS in reaching the customer needs? In reacting, what is the role of the MKIS in reacting to customer needs? कस्टमर्स की जो ज़रूरत है उसको इमीडिएटली रिएक्ट करने में MKIS का क्या रोल है? Modifying and improving the products and services, correct? Dissolving the SBS SBI, supporting the decision support system and executing fundamental functions. जो भी कस्टमर नीड्स जब पता चल जाता है तो वो MKIS के थ्रू जब हमें पता चल जाएगा तो वी शुड इमीडिएटली मॉडिफाई आवर प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट्स सो दैट हम कस्टमर की जो चेंज्ड नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकेंगे. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What is the primary focus of asset allocation management in wealth management? वेल्थ मैनेजमेंट में जो एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम अडॉप्ट करते हैं उसका प्राइमरी फोकस क्या रहता है? सो बैलेंसिंग द रिस्क बाय मूविंग अमंग द इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज, इनिशिएटिंग द इनकम जनरेशन, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल गोल एंड डिजाइनिंग ए कस्टमाइज सॉल्यूशन. सो एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट का पर्पस यही है कि वो जो रिस्क हम लेते हैं वो हमेशा मैनेज होना चाहिए. सो बैलेंसिंग द रिस्क बाय मूविंग अमंग द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. MKIS consists of three subsystems. As usual, when we are going for true and false, अगर हमारा स्टेटमेंट सही है तो देर इज नो इशू ऑन दैट, बट अगर स्टेटमेंट सही नहीं है वी विल डिस्कस करेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. MKIS consists of three subsystems. First is internal record system, second is market intelligence system, and third is marketing research system. What is the answer for this? This is not the correct because there are 4 steps that are involved in this. कौन से 4? जैसे आपको आइडिया है MKIS में 4 सब सिस्टम्स है. कौन से है? फर्स्ट इज इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, दिस इज करेक्ट. सेकंड इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम इज ऑल्सो करेक्ट, but they have not informed us about the marketing management and science system. That is the reason our answer is false, because the statement what they had given is an incomplete statement. Because if we don't consider marketing management and science system, the entire exercise done these three phases will be of no use. Next statement. Mandatory convertible bonds provides investors with the option but not the obligation to convert them into equity shares upon maturity. क्या कह रहे हैं वो कि जो मैंडेटरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, पहले बताइए मैंडेटरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या है? मैंडेटरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मीन्स एट प्री डिसाइडेड रेट जो बॉन्ड्स रहेंगे वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. एंड ये क्या प्राइस से कौन से डेट में ये कन्वर्ट होने वाले हैं इन्वेस्टर को पहले से ही मालूम रहता है. सो यहाँ इन्वेस्टर को कोई चॉइस नहीं है एट द टाइम, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सब्सक्राइब दिस बॉन्ड्स बाय नोइंग द फैक्ट्स. इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. Mandatory convertible bonds provides investors without any option, but he has the obligation to convert them into equity shares upon maturity. So this is also because of this statement is not the correct one. Now we will read the correct statement. The mandatory convertible bonds obligate the investor to convert them into equity shares of the issuing company upon maturity.
it is the duty of the investor to accept this because they have already subscribed these bonds knowingly the fact. Now we will go for multiple choice multiple option question. इसमें हमें एक statement दिया जाएगा and there will be 4 subsequent statements which we have to correlate with the main statement. इसमें जो भी statement सही होंगे उनका group रहेगा and we have to find out which of the statements are correct. So which of the following statements about the functions of the marketing information system are correct? They are asking about the functions of the marketing system. So कौन से इसमें सही है? Information needs to be collected on a continuous basis from both internal and external sources. सही है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अगर उनको रोबस्ट MKI से मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम रखना है तो उनको इंफॉर्मेशन जो कंटिन्यूस बेसिस पे कलेक्ट करनी चाहिए एंड फ्रॉम देयर बोथ इंटरनल एज वेल एज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, तभी उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी. एंड जब तक उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू टेक द करेक्ट डिसीजन ऑन दैट. सो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है उस डाटा को प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन फॉर क्रिटिकल एनालिसिस. दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. जब कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है then subsequently this will get classified in various groups and वो group को summarize किया जाता है and after that they will do the critical analysis of that particular data which will be helpful for taking the correct decision for the management. So B is also a correct statement. Dissemination involves storing the collected data and proceeds data for future reference. What is the meaning of this? Dissemination का मतलब यह है कि whenever any person requires the data, he should provide the data in the manner in which he is asking for. So this is not the correct statement because dissemination does not involve storing the collected data. So dissemination is making the information readily available to the person who is asking for. So C is not the correct statement. Analysis involves drawing conclusions using various tools to aid the decision making is also a correct statement. So यहाँ अगर हम देखते हैं तो A, B and D are correct statement. So A, B and D are appearing here. So B is our correct answer for this. What does a bond issuer promise to pay to the investor in case of bond? जो कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है वो इन्वेस्टर को बॉन्ड के बारे में क्या एश्योरेंस देती है. जब बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो बॉन्ड इशूअर कंपनी इन्वेस्टर को ये बताती है कि वी विल पे यू अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड एंड ऑन ड्यू डेट द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी रीपेड टू यू. So what does they assure? Fixed principal amount at maturity, unlimited interest for the life of the bond, a specific interest for the life of the bond and principal amount at maturity and variable interest for the life of the bond. So C is the correct answer for this question. What does a reverse convertible bond allow is the issuing company to do upon maturity? रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड में मैच्योरिटी के दिन इशूइंग कंपनी को क्या डिसीजन लेने को अलाउड है. तो जैसे हम नॉर्मली कन्वर्टेबल बॉन्ड जब डिस्कस करते हैं तो मैंडेटरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड जो थे उसमें इन्वेस्टर्स को या अगर ऑप्शनल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि ऑन ड्यू डेट ही कैन कन्वर्ट हिज बॉन्ड इनटू द इक्विटी. In the same way, reverse convertible bond means exact opposite to this. वहाँ इन्वेस्टर को कोई चॉइस नहीं है लेकिन जो इशूइंग कंपनी है उनको ऑन ड्यू डेट ये चॉइस है कि वो डिसाइड करते हैं कि उस बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं जाएगा. ये चॉइस जो है ये प्रिविलेज जो है वो उनके पास है. सो
What does a reverse convertible bond allows the issuing company to do upon maturity? Convert the bond into equity shares and at predetermined conversion price. Convert the bond into shares only if the investor agrees. Hold the right to convert into equity shares at predetermined conversion price and refuse conversion. So, what is the right that issuer is having? Issuer is holding the right to convert into equity shares at predetermined conversion price. So, C is the correct answer for this question. How is the value of sovereign gold bond is determined? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू डिसाइड की जाती है गोल्ड की, वो किस तरह से डिसाइड की जाती है? नॉर्मली जो प्रीवियस जिस दिन बॉन्ड इशू किया जाता है उसके 3 दिन पहले का गोल्ड प्राइस जो रहता है, दैट उनका सिंपल एवरेज लेके दैट विल बी द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड. सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस 3 days प्राइस ऑफ गोल्ड, based on the annual average price of the gold, based on the fortnightly average price of the gold, and based on the consumer price index. So A is the correct answer for this question. And जो एवरेज लिया जाता है वो एवरेज भी सिंपल एवरेज लिया जाता है. प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ. What is the primary purpose of general obligation bonds issued by local authorities? लोकल अथॉरिटीज जब जनरल बॉन्ड्स इशू करते हैं, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड इशू करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज? तो लोकल अथॉरिटीज जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स इसीलिए यूज करते हैं कि जो उनको फंड्स आ जाता है दे यूज फॉर एनी पर्पज इन व्हाट वे दे डिसाइड. So this is the purpose of general obligation funds. It means funds will be utilized for general purpose. And इसीलिए उन बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रीपेमेंट करना है या प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है वो भी जो जनरल रेवेन्यू म्यूनसिपैलिटी को जनरेट किया जाता है उसी में से ही रिफंड किया जाता है. सो फाइनेंस टू फाइनेंस द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, टू जनरेट रेवेन्यू फॉर म्यूनसिपैलिटीज, फंड फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स and provide liquidity to investors. B is the correct answer here, क्योंकि जनरल ऑब्लिगेशन फंड्स के बॉन्ड्स का मेन जनरल पर्पज यही है, प्राइमरी पर्पज टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर म्यूनसिपैलिटीज. सो B is the correct answer for this question. How are the revenue bonds different from general obligation bonds issued by local authorities? लोकल अथॉरिटी जब जनरल बॉन्ड इशू करती है एंड लोकल अथॉरिटी जो रेवेन्यू बॉन्ड्स इशू करती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स हमने देखे थे, उस दीज आर यूज फॉर जनरल पर्पज ऑफ देयर लोकल अथॉरिटी, वेरेज रेवेन्यू बॉन्ड्स जो यूज किए जाते हैं दीज आर यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज एंड वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से ही जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा वही रेवेन्यू में से बॉन्ड्स रेवेन्यू बॉन्ड होल्डर्स का रीपेमेंट वेदर इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट और वेदर इट इज़ ऑफ प्रिंसिपल किया जाता है. वेयर जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स जो है उनसे म्यूनसिपैलिटी का जो जनरल रेवेन्यू होगा उसी में से बॉन्ड होल्डर्स को रीपेमेंट किया जाता है. दैट इज द डिफरेंस. So they are repaid from the project specific revenue is the correct answer for this question. So C is the correct answer for this question. What distinguishes the open-ended funds from close-ended funds? Open-ended funds close-ended funds से क्या किस तरह से different है? Open-ended funds जो है उसमें इन्वेस्टर कभी भी रिडीम कर सकते हैं, whereas क्लोज-एंडेड फंड्स में उसको रिडीम करने के लिए ही कैन डू इट ओनली आफ्टर सर्टन स्पेसिफिक पीरियड. दैट इज द डिफरेंस. ओपन-एंडेड फंड अलाउस इन्वेस्टर्स टू रिडीम एनी टाइम while close-ended funds have a lock-in period. Or close-ended funds offer higher returns. Open-ended funds allow investors to redeem after lock-in period. नहीं, गलत है. Close-ended funds have the fixed investment objective is not relevant. So A is the correct answer for our question. Next statement. अब now we will again see true and false. A particular statement सही है या गलत है. Let us see. Private banking provides personalized financial services to individuals but not to HNIs. गलत है. प्राइवेट बैंकिंग जो है इंडिविजुअल्स के लिए है एंड स्पेशली फॉर HNIs के लिए.
ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? प्राइवेट बैंकिंग प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड financial specific services to high net worth individuals. This is the correct statement. Investment involves sacrificing for future consumption to obtain a return in the present. What is the meaning of investment? Investment में हम क्या करते हैं? कौन सा कंजम्पशन में सेक्रीफाइस करता हूँ? इन्वेस्टमेंट में मैं मेरा प्रेजेंट कंजम्पशन सेक्रीफाइस करता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में बेनिफिट ले सकूँ। सो दिस इज द नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यही है कि इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सेक्रीफाइसिंग प्रेजेंट कंजम्पशन टू ऑब्टेन अ रिटर्न इन फ्यूचर। आज का कंजम्पशन मैं मेरा सेक्रीफाइस करूँगा तो वही कंजम्पशन के ऊपर फ्यूचर में मेरे को इनकम मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। Next, now it is multiple choice, multiple option question. Which type of management are dealt in wealth management? वेल्थ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है या किस तरह की मैनेजमेंट काम करती है? यू कैन टेक इट इन आइदर वे. फर्स्ट इज एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट, यस, टैक्टिकल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट. जब हमने डिस्कशन किया था हमने यही देखा था वेल्थ मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं. दीज आर, फर्स्ट इज asset allocation management, so this is the correct. Next was tactical management, that was also correct, and third was diversified management, so this is also correct. And wealth management में financial risk management इस तरह का कोई टाइप मैनेजमेंट टाइप नहीं आता है, so C is not the correct statement for me. A, B and D is the correct statement, so B is my answer for this question. अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि वी हैव स्टार्टेड अ बैचेस वेयर इन वी कंडक्ट क्लासेस रेगुलरली फॉर JAIIB एंड CAIIB पार्टिसिपेंट्स. एंड इसके लिए वी हैव ऑनलाइन इंटरेक्टिव बैचेस जहाँ हम सभी टॉपिक्स के लिए ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं. और we provide the recorded version of the lectures also, discussions also, ताकि participants can revise it at any time whenever they wish. साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट भी प्रोवाइड किया जाता है, where we provide sufficient multiple choice questions for practice, ताकि as you know मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा स्पीड बढ़ता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, जो हमें एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाता है. इसी के साथ साथ केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज CAIIB पार्टिसिपेंट्स के लिए केस स्टडीज़ आर वेरी क्रिटिकल. एंड केस स्टडीज़ में जितने ज़्यादा केस स्टडीज़ आप सॉल्व करोगे वही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में केस स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, जो आपको अच्छा स्कोर अचीव करने में हेल्प कर सकता है. सो डिटेल डिस्कशन या डिटेल इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में हमने प्रोवाइड की है, जो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन रेफर दैट लिंक्स सो दैट दे विल गेट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड देन दे कैन गो फॉर दैट. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के लिए भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें. लेट अस स्टार्ट. व्हाट डज ए सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान इन म्यूचुअल फंड्स? We have seen there are two types of systematic plan. First is systematic withdrawal plan and systematic investment plan. Systematic investment plan में हम regular basis पे उस fund में हम invest करते जाते हैं so that we are able to build a corpus on that. Whereas in systematic withdrawal plan में on specific days certain number of units are being sold and we get that proceeds from that units as your regular income. So this is known as the systematic withdrawal plan. Invest in a fixed amount at regular investors, redeem the entire investment at once, withdraw a fixed amount at a predetermined intervals, withdrawal of part amount at random basis. C is the correct answer for this question. What is the main source of income for real estate investment trust REITs? REITs का main source of income क्या है?
रीट्स नॉर्मली क्या करती हैं, वॉट एवर में भी द रियल इस्टेट दे हैव, वो लीज पे देती है या रेंट पे चढ़ाती है, एंड उससे जो इनकम आता है दैट इज डिवाइडेड एज अ डिविडेंड अमंग द रीट्स होल्डर्स. So dividend from leasing service is the main source of income for these REITs. What is the focus of personal financial planning in wealth management? Wealth management में personal financial planning में focus किस में रहता है? Providing banking and investment service, assessing the client's risk appetite, creating a financial plan based on the client's goal and net worth, and offering tax management services. तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल प्लान बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स गोल एंड नेटवर्क इज द मेन फोकस पॉइंट फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट. ताकि एक बार हमें क्लाइंट का गोल पता चल गया, क्लाइंट का नेटवर्क पता चल गया, देन वी विल बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ हिज वेल्थ. सो C is the correct answer for this question. What is the fee structure for investment managers while managing the investment? इन्वेस्टमेंट मैनेजर जब इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं तो नॉर्मली वो कौन से वो जो फी चार्ज करते हैं वो कौन से फी स्ट्रक्चर के मुताबिक चार्ज करते हैं? फिक्स फी रिगार्डलेस ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू, नो फी चार्ज, स्लाइडिंग स्केल बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो वैल्यू, एंड परसेंटेज ऑफ द रिस्क. नॉर्मली इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो फी चार्ज करते हैं दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ते जाता है परसेंटेज बेसिस पे वो अमाउंट कम हो जाती है, विच इज नोन एज द स्लाइडिंग स्केल. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Sliding scale based on portfolio value is the fee structure for investment management or investment managers while managing the investment. Next question. What is the purpose of analyzing securities in investment management? What is the purpose of analyzing securities in investment management? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसका वो जो सिक्योरिटीज़ हैं उसका एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम एनालिसिस करेंगे तभी हम सिक्योरिटीज़ की हिडन वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, जेन्युइन वैल्यू क्या है, ये पता चल जाएगा. दैट इज नोन एज द फाइंडिंग आउट ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू. एंड उसके बाद on the basis of that intrinsic value and the value which is payable in the market or present in the market, on the basis of that we can decide for whether the security is underpriced or it is overpriced, and what will be the future price trend of that security. So what is the purpose of analyzing of securities? To ensure tax saving, to achieve diversification, to find intrinsic value and future price trends, and to eliminate risk. C is the correct answer for this question. What does portfolio appraisal involve in investment management? Selecting securities for the portfolio, measuring the risk and return on securities, maximizing the risk, and constructing a diversified folio. So what is the correct meaning of this? कि जो हम पोर्टफोलियो अप्रेजल क्यों करना है? ताकि जो हमें सिक्योरिटी जिसमें हमने पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उनके ऊपर हमें जो रिटर्न मिल रहा है एंड साथ साथ हम जो रिस्क ले रहे हैं बोथ आर मैचिंग, ताकि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता. बिकॉज व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट? टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न विथ द मिनिमम रिस्क. एंड इसीलिए टू फॉलो दिस, टू अडर दिस प्रिंसिपल, हमें हमारा जो पोर्टफोलियो है इसको रेगुलर बेसिस पे अप्रेजल करना जरूरी है. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट अस हैव अ री-लुक एट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. सो वी विल हैव 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स ब्रेक. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको चेक कर दीजिए ताकि हम उसको
If you have any doubt on that, we will ask it or we will reply it. Otherwise, we will go ahead. Let us continue. Portfolio appraisal involves measuring the risk and return of securities and comparing them with expected risk and return, but it does not involve evaluating the performance of portfolio. क्या कह रहे हैं ये हमें? Portfolio appraisal involves measuring the risk and return of securities, yes, and comparing them with expected risk and return. But up to this, it's okay. कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जो हमने अभी रिस्क लिया है इन इन्वेस्टमेंट्स, उसके साथ हमें चेक करना है, इसमें मेजर करना है एंड उसको एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न के साथ कंपेयर भी करना है. बट इट डज नॉट इन्वॉल्व evaluating the performance of the portfolio is not the correct statement. Second part of the statement जो है ना वो सही नहीं है. So what is the correct statement? Correct statement is portfolio appraisal involve evaluating the performance of portfolio by measuring the risk and return of securities and comparing them with expected return. यहाँ तक तो ठीक है. So our answer is false for this statement. Passive portfolio management aims to beat the performance of market index such as Nifty. There are two types of funds. One is active portfolio management and passive portfolio management. Passive portfolio management क्या है कि जो हमारा इंडेक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं वो इंडेक्स में सभी सिक्योरिटीज़ में जो वेटेज दिया है हम हमारे फंड्स भी इन द सेम वेटेज हम इन्वेस्ट करेंगे सो दैट जितना आपका इंडेक्स में चेंज होगा उतना ही हमारा फंड में भी चेंज हो जाएगा या रिटर्न्स विल बी द सेम. बट इन एक्टिव मैनेजमेंट द मेन पर्पज यही रहता है कि they want to beat the performance of market index such as Nifty. So our answer is false. Correct statement is passive portfolio management aims to copy the performance of index by investing in the same securities with same weights. Now we will go for a multiple choice, multiple option question. Which statements are true about the sovereign gold bonds? Sovereign gold bonds के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? Which statements are correct? They allow investment in digitized form of gold. Yes, this is the basic advantage of sovereign gold bond. हमें हमारी जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है इसके लिए हमें घर में गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल गोल्ड की हमें ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ द रीज़न यू आर होल्डिंग योर गोल्ड इन डिजिटाइज फॉर्म, नॉट इन फिजिकल फॉर्म. तो इसके लिए रिस्क कम है, सिक्योरिटी ज़्यादा है. सो ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. Interest generated via this tax bond is taxable. This is not the correct statement. गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो टैक्स फ्री है. सो बी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. Liquidity is possible after a period of 5 years. Yes, this is the minimum period within which you cannot redeem these bonds. After 5 years, you are able to liquidate your bond. So C is the correct statement. And redemption is only possible based on the date of interest disbursal. And इस बॉन्ड को आपको अगर लिक्विडेट करना है तो यू कैन डू दिस, बट उसका जो रिडम्पशन होगा that will be done on the same day when interest on these bonds is payable. So उसी दिन redemption भी हो जाता है. So C is the correct. C is also the correct statement. तो यहाँ अगर आप देखते हो तो A, C and D are the correct statement. A, C, D यहाँ है तो D is correct answer for our statement. Next. Why is the revision of the portfolio necessary in investment management? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो का रिवीजन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जब भी हम फंड्स इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर सर्टन पीरियड वी हैव टू डू द रिवीजन, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा जो सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट किया है
उससे जो हमें रिटर्न्स मिल रहा है, whether these are in proportion to what we have expected or what we are desiring to achieve our goal. इसी पर्पस के लिए रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इज नेसेसरी to eliminate all risk, to achieve the desired goal of investment, to increase the transaction cost, to avoid any type of appraisal. So B is the correct answer for this question. What is the primary function of the front office in investment bank's organizational structure? इन्वेस्टमेंट बैंक के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फ्रंट ऑफिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है या इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, दे आर वर्किंग इन 3 फंक्शंस. फर्स्ट इज फ्रंट ऑफिस, सेकंड इज मिडल ऑफिस एंड थर्ड इज बैक ऑफिस. तो फ्रंट ऑफिस का जो मेन फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवीजन जनरेशन करना, रेवेन्यू जनरेशन करना इज देयर मेन पर्पस. So C is the correct answer for that question. What are the key elements of portfolio management? Portfolio management के क्या key elements हैं या कौन से key elements हैं? First, sales, trading and advisory, asset allocation, diversification and rebalancing, underwriting, merger and acquisition and asset management, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल. जैसे हमने जब ये यूनिट डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल दैट अंडरराइटिंग, merger and acquisition and asset management are the key elements of portfolio management. So C is the correct answer for this question. Here I am wrong. Okay. As here the correct answer is asset allocation. Okay. So portfolio, I'm sorry, मैंने कैपिटल में वेल्थ बैंक की बात की थी. सो इन्वेस्टमेंट बैंक का मैंने आंसर आपको बताया था, बट हियर दे आर आस्किंग अबाउट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ओके, what are the key elements of portfolio management? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या की एलिमेंट्स हैं? एक तो पहले हमें एसेट्स अलोकेट करना पड़ेगा. जब भी हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त वी हैव टू अलोकेट द एसेट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. क्यों? दिस इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग वन फ्रेज विच इज नोन एज डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट, ताकि इसी वजह से आपका रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड विच इज गुड फॉर एनी गुड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एनी गुड पोर्टफोलियो मैनेजर. सब्सिक्वेंटली जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, after certain period we have to do the review of our portfolio, that is known as rebalancing, because if we do the review of our portfolio we will be able to find out whether the returns what we are achieving on this portfolio is in line with what we have expected to achieve our desired goal. And नहीं है, if it is not the case, देन हमें वापस रीबैलेंस करना पड़ेगा. वो फंड्स कुछ निकाल के वापस दूसरे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू अचीव योर ओन गोल. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Which office in an investment bank is responsible for ensuring that bank's activities Which office in an investment bank is responsible for ensuring that the bank's activities are aligned with the health of its policies? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर वर्किंग इन 3 डिपार्टमेंट. फर्स्ट इज फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस एंड बैक ऑफिस. फ्रंट ऑफिस का रोल जो है वो रेवेन्यू जनरेशन है. मिडल ऑफिस का जो रोल है कि मिडल ऑफिस को ये इंश्योर करना है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है, they are working as per the prescribed guidelines or policy of the bank. And third is back office is providing support to the front office for executing their business activities. So it is the duty of the middle office to ensure that
बैंक एक्टिविटी जो कर रहे हैं, which are aligned with its else and policies. So B is the correct answer for our question. What are the services offered by fully service investment bank? Fully service investment bank कौन से services offer करती है? Where it comes merger and acquisition, etc. So here capital raising, underwriting, mergers and acquisitions, sales, trading, asset management is the correct answer for this. B is the correct answer for this question. How do portfolio management service, how do PMS charges fee compared to mutual fund? हमने when we were discussing about it हमने ये देखा था कि PMS किस तरह से सर्विसेज चार्ज कर रही है, म्यूचुअल फंड किस तरह से सर्विसेज चार्ज कर रही है, उसमें सेबी ने क्या अमेंडमेंट लाया है, क्या प्रोविजंस की है ताकि स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आर अप्लाई. So PMS charge a fixed fee at entry and exit, while mutual fund charge percentage of profit. PMS charge an AMC fee only, while mutual funds charge fixed management fee. PMS charge a share in the profit or over a particular rate of return, and mutual fund charges fixed or attributed at the entry and exit. PMS charges percentage of investment amount, while mutual fund charges fixed fee for portfolio management. So C is the correct answer for this question. PMS जो है means they are charging a certain rate of interest which they are by way of on the profit they are providing to the investor beyond the minimum profit assured by them. So this is also one of the way of earning the revenue, and whereas mutual fund charges are fixed fee contributed at entry and exit level. So C is the correct answer for this. Now we are going for the multiple choice, multiple option question. What are the key differences between the portfolio management and investment banking? Portfolio management and investment banking में क्या differences हैं? Portfolio management focus on managing clients' investment to meet the financial objective. This is the correct statement. Portfolio management में client की जो investment needs है वो ध्यान में रख के portfolio management को decision लेना पड़ता है. Investment banking involves managing the portfolio of assets of the client is not the correct answer. Portfolio management requires understanding SWOT analysis across various statements is also a correct statement. We have already discussed it in detail. And investment banking mainly deals with raising capital and providing financial services to clients is also a correct statement. Here A, C and D are the correct. A, C, D are coming in this. So B is ultimately answer for our question. What is the aim of active portfolio management? What is the aim of active portfolio management? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में. हमने एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि दे इन्वेस्ट इन सच अ वे दैट उनके जो रिटर्न्स है वो इंडेक्स रिटर्न से, स्पेसिफिक इंडेक्स रिटर्न हो या पैसिव फंड जो हो उनसे ज़्यादा रहते हैं. To beat the performance of market index such as Nifty is the aim of the active portfolio management. So C is the correct answer for this question. Which type of portfolio management, which type of portfolio management services PMS allows the portfolio management to completely control the portfolio and freedom to adopt any strategy. Active portfolio, passive portfolio, discretionary portfolio and non-discretionary portfolio. These are the 4 types of portfolio management. तो उसमें passive, active we have seen, passive we have seen. Discretionary portfolio management is useful for those investors, those who either don't have time or don't have knowledge about it. इनके लिए ये अच्छा है. ये जो in this game जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है हमें उसको फंड्स देते हैं एंड वी विल टेल हिम दैट आपको इस फंड्स को अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इन्वेस्ट करना है एंड यू हैव टू प्रोवाइड मी दैट स्पेसिफिक रिटर्न.
इट मीन्स उस फंड्स में जो कंप्लीट कंट्रोल जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर का रहता है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What is the purpose of SEBI tightening the disclosure norms in portfolio management services? SEBI जो PMS में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नॉर्म्स जो स्ट्रिक्ट कर रही है उसका क्या पर्पज है? टू अलाइन PMS विथ म्यूचुअल. अभी दोनों के लिए अलग अलग तरह के चार्जेस हैं, तो वो दोनों एक्टिविटीज जो है वो ठीक तरह से अलाइन हो जाए. दैट शुड बी द पर्पज ऑफ दिस. To align the PMS with mutual fund industry process is the correct answer for this. तो आज हमने डिटेल में काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड स्पीड भी थोड़ा आज हमने ज़्यादा रखा था कंसिडरिंग यू हैव टू गो ऑन अ जॉब. लेकिन अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन. आपको अगर कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो मेरे को चैट बॉक्स के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता दीजिए, ताकि डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो ये इन्फॉर्मेशन आप फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं एंड वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग मेनली ऑन ऑप्शनल ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स ओनली, सो दैट विल बी हेल्प टू यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे एंड आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे. या अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपका क्वेश्चन आप इस मेल आईडी पे या कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे भिजवा दीजिए, ताकि हम उसको तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं. विद दिस I will conclude our today's session for a day and wish you all the best and thank you very much.